the chapter which we had started was the summed up 6 steps process of this biotechnology RDN technology. ठीक है, तो 6 steps में हम लोगों ने first step पढ़ा, that is of the isolation of the genetic material out from the cell with the help of the enzymes. Second step we did was cutting and then separating out the gene of interest, है ना, cutting it with the help of the enzymes, restriction endonucleases at the specific sites, then separating out into the smaller fragments, the fragments which are then taken out for the further study of the gene of interest, right? So this was the second step. Coming to the third step, which we introduced yesterday also, but it was not completed. That is by using the technique PCR. The third step is actually amplification of the gene of interest. You can write the third step as amplification of gene of interest. Okay, amplification of the gene of interest. The gene of interest which we have got now, because I told you yesterday also that this gene of interest is after so many processes we have taken out, we have figured out what is the required gene for our desirable change. Okay, so that gene is only one which we have got. So if we proceed further only with one single gene, then it may also lead to the some of the, you can say, the experiment may go wrong, कंटामिनेशन हो सकता है, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट बीच में गलत हो जाए, हमारा ये प्रोसेस पूरा टेक्निक जो है वो पूरा बीच में से गलत हो जाए. सो जस्ट टू अवॉइड टेकिंग दिस चांस, क्योंकि वापस फिर से हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, then we are just going to make its multiple copies, thousands of its copies, so that we can proceed with thousands of the further processes. ठीक है, thousands of the further proceedings after this, ताकि हमारे पास इतनी सारी कॉपीज क्रिएट हो जाए, हमें वापस फिर से आइसोलेशन, कटिंग, डीएनए का फिर से उसको सेपरेशन करना, फिर से उसको स्टडी करना, जीन ऑफ इंटरेस्ट लोकेट करना, इतने मुश्किल काम दोबारा ना करने पड़े. तो उसके लिए क्या है, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट्स कॉपीज. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एम्प्लीफिकेशन of the gene of interest. This is done by using this technique, which is PCR. The full form of this is polymerase chain reaction. This polymerase chain reaction that is having the series of, chain means it is a series of reactions that are taking place using the enzyme, that is DNA polymerase or the Taq polymerase. Using the enzyme, undergoing the various chain reactions, various series of the reactions, and hence it can proceed following the number of copies. Okay, how it is done? This is done by 3 steps. The first step is denaturation. Denaturation, as the name is saying, D means to remove out. That is removal of the nature of the DNA. That is, if the DNA was initially say double stranded, it is double stranded, है ना? So we say this is the gene of interest which we have obtained already. ठीक है, which is double stranded DNA. This was the antipolarity structure of the DNA. For the double stranded DNA, which is a double stranded means it is a bonded DNA having a stable structure. To create its copies, first we need to open out this structure. ठीक है, हमें स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा ताकि हम इसके अंदर एक्स्ट्रा प्राइमर्स ऐड करवा सकें. प्राइमर्स के साथ फर्दर हमारे पास डीएनए की कॉम्प्लीमेंटारिटी जो है, एज वी रेड इट इन द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स, रेप्लिकेशन में कॉम्प्लीमेंटरी जो बेस पेयर्स हैं वो अटैच होते रहते हैं, एंड हेंस क्रिएटिंग द न्यू ऑफ द स्ट्रैंड्स. ठीक है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस स्ट्रक्चर इज डीनेचर्ड. ओके, so denaturation is done at a specific temperature, at a very high temperature of 94 degrees centigrade. Right? So this is the first step of denaturation. As a result of denaturation, the 2 strands, they are going to separate out. And so create more of the space in between the 2. So the 2 strands, they are going to separate out. 1 minute. So this is the separation of the 2 strands, right? The 2 denatured strands, when they will be separated, their bonds will be broken down from in between. They will be followed after by annealing.
annealing is the second step of this process, in which the primers, small sequenced oligonucleotides, they are basically used as primers for getting the complementary pairing. Okay, so this is 3' to 5'. This has been denatured. ठीक है, ये अलग हो चुका है DNA strand. So the second step of annealing is done, in which the primers are added. ठीक है, small sequenced nucleotides, oligonucleotides, they are used. Okay, they are called as the primers. This is 5' to 3'. Similarly, on this strand also there will be the primer who will be attached. Okay, right? The primers, they are attached to the ends of the denatured DNA. This is primer I've written. Okay. Now these primers, they need their extension. For extending, means for extended pairing of their bases, they require a special enzyme that is called as a polymerase. That is DNA polymerase is required in the next step, which helps in extension. Or this also requires an enzyme which is also named as TAQ polymerase, TAQ, because of its isolation from an organism. It is Thermus aquaticus. Okay, Thermus aquaticus से ये TAQ polymerase isolate किया गया, तो TAQ, TAQ. Okay, so TAQ polymerase or the DNA polymerase that has been isolated and introduced, creating the third step. Now, what is the third step after this? That is, after annealing, it is extension. So this is extension. Extension is specifically done at a temperature 72 degrees centigrade. Right? When the extension takes place, the whole of the full length DNA is going to be double stranded now. है ना? क्योंकि अब ये extend हो गया है, जो primer है, it has been extending, and similarly we will be getting 2 of the double stranded DNA back again, you know, which are having the paired forms. So this is their polarity also, that is 5' to 3'. This was 5, 3, 3. Okay, so from one DNA we have obtained 2, and so on. We can just move on with this particular. After this, अब इन दोनों DNAs को वापस फिर से introduce करवा दो to this step of denaturation. ठीक है, so this can be further introduced into here. Again, the 2 of these strands, they are going to be denatured. ये वापस इसको continue करवा रहे हैं. ठीक है, this is to continue with this particular step, that is denaturation. Okay, so 1,000 times, million times you can just denature it, creating the whole process back again. 2 of these will be creating more of the copies, and hence number of the copies. So this is going to create 1,000 times, million times, you can simply write billion times. Okay, repeating the process as many times as the copies you want. So for that, you will be repeating the process, and there will be, for the gene of interest, which is represented by this double stranded DNA, this gene of interest is going to give us amplified number, means a huge count of the gene of interest will be available. Okay, clear? So this is step number 3. Is this clear to all? Yes. Is it clear to all? Any confusion in the third step, that is of amplification of gene of interest? All set? Now, after getting the gene of interest, what we are going to do is, क्या करना है अब हमें? इस gene of interest को हमें host cell के अंदर introduce करना है ना? Insertion of the gene of interest into the host cell. अब वापस हमें इसको host में डालना है.
अब कैसे डालेंगे? होस्ट सेल में डालने के लिए भी हमने टेक्निक पढ़ा था पहले. व्हाट वाज दैट टेक्निक? एनीवन? प्लीज रेज योर हैंड. हाउ कैन वी, what is the first requirement for the introduction of this gene of interest or the recombinant DNA into the host? Yes, what is the first requirement? सबसे पहला क्या करेंगे आप? Insertion of recombinant DNA into the host. Yes, tell me. Just now, just a few days back, one or I think yesterday or one day before yesterday, I think we have discussed this topic. Insertion of recombinant DNA into the host cell. How this is going to be done? No one? Very bad. Raise your hand for the answer. This will be done by first making the host cell as competent. For this, we have to first make the host cell as a competent host cell. है ना? So हमें सबसे पहले इस सेल को competent बनाना है. होस्ट सेल को कैसे बनाते हैं? कोई अब ये बताएगा मुझे? How to make this host cell as competent? That is, it can easily hold on this rDNA, recombinant DNA. Raise your hand. How to make a host cell as competent? That is by treating it with the divalent cations. Competent host cell बनाना है by treating it with the divalent cations और dicationic ions. ठीक है, तो इनके साथ जब भी हम इसको होस्ट सेल को ट्रीट करते हैं, it becomes competent, ready to uptake the rDNA. And after that, how to insert this rDNA into the host cell? That is using the different techniques that we studied. They are like microinjection, gene gun, biolistic or the gene gun technique, heat shock therapy or the disarmed pathogens. ठीक है, whatsoever the conditions are, सबसे पहले तो हमें उस recombinants को अलग करना पड़ेगा, transformants को, recombinants को, ठीक है, वो अलग करने पड़ेंगे. वो कैसे करते हैं हम? by using the selectable markers. ठीक है, जिन सेल्स में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिन सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पहले तो हमें वो चेक करना है कि इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुए हैं, है ना? तो जब ये रिकॉम्बिनेशन हमें पता चल जाएंगे, देन ओनली वी कैन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, तभी हम डाल पाएंगे ना इसके अंदर. तो वो रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्टेबल मार्कर्स की मदद से हमने क्या किया? हमने उनको आइडेंटिफाई किया एंड वी कुड सेपरेट आउट ऑल द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. जब सेपरेशन हो गया, जब हमें रिकॉम्बिनेंट्स लोकेट हो गए कौन कौन से, फिर हमने इसमें वेरियस टेक्निक्स यूज करके विद वेक्टर, विदाउट वेक्टर, डायरेक्टली थ्रू द माइक्रो इंजेक्शंस वी आर इंसर्टिंग इट इन द न्यूक्लियस. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करनी है, दैट इज इनटू द होस्ट सेल. फर्स्ट मेक इट कॉम्पिटेंट, then separate out the recombinants with the help of selectable markers, and then using the different of the techniques we can simply introduce or insert the rDNA into the host cell. Okay, done. After now the recombination has taken place, we have also introduced this recombinant into the host cell. Now we will be obtaining a foreign gene product. मतलब अब दूसरी जीन के साथ एक नवा जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो गया वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा. We are going to get that. So that is obtaining a foreign gene product. अब जो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लाए हो इस फॉरेन जीन के साथ, उसका एक प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन हो चुका है. ठीक है, now this foreign gene product, that is the one which is having those desirable characteristics which we were looking for since the start of this technology. जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमने एक चेंज लाना शुरू किया था, वो चेंज अब आ गया है और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हुआ है that is having the foreign gene that we are getting it now. Now again the condition says, आपने सपोज यहाँ पे thousands of copies बनाई, मैंने 1000 टाइम्स लिख दिया, ठीक है, 1000 copies जनरेट करी जीन ऑफ इंटरेस्ट में. 1000 जीन ऑफ इंटरेस्ट है मींस 1000 of the cells we are creating. Will those 1000, all 1000 are going to give you the 100% results? No, there will be certain recombinants, there will be certain non-recombinants. आधे तो यहीं पे filter out हो गए, है ना? Then there will be certain transformants, there will be certain non-transformants जिनमें transformations नहीं हो पाई, है ना? तो उनमें से भी आधे यहीं पे filter out हो गए. So we are left with only a small amount of the cells which really show this foreign gene product.
है ना, थोड़े से ही रह गए हमारे पास सेल्स। अगर मैंने 1000 कॉपीज बनाई थी, मैंने 1000 टाइम लिखा, आप जितना मर्जी लिख सकते हो। अगर मैंने 1000 कॉपीज जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनाई, 1000 कल्चर्स लगाए, 1000 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगी, उनमें से बहुत लेस नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। तो क्या हम उतने से लेस नंबर के साथ हम पूरी पब्लिकली क्या इसकी मार्केटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मीन्स वॉट, वी नीड टू प्रोड्यूस देम एट अ लार्ज स्केल। अब हमें उसको सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, लोग उसका सारा अच्छे से कंज्यूम अप कर सकें फॉरेन प्रोडक्ट को, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, जिसको इतनी टेक्नोलॉजिकली बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। तो उसके लिए जस्ट अ स्मॉल अमाउंट कैन नॉट सर्व इट एज अ होल, right? So for that we need to produce a large scale production will be made for these foreign gene products. And how is this possible? Using the bioreactors. Bioreactors क्या हैं? They are the large sized vessels which have the culture medium, which have the special controlled conditions, ठीक है, that for growing up or for multiplying the recombinant cells जो ऑलरेडी हमारे पास बन चुके हैं, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशंस आ चुकी हैं, जो हमारा फाइनल फॉरेन जीन प्रोडक्ट बन चुका है, उसके मल्टीपल सेल्स हम लोग क्रिएट कर सके. सो दैट इज यूजिंग दीज लार्ज साइज वेसिकल्स, वेसल्स which are called as a bioreactors. ठीक है, there are two types of bioreactors which are explained, just given the photographs of your these two types of the bioreactors. They are, first is stirred type of bioreactor. Stirred type of bioreactor is goes to stirred type of bioreactor, and another is sparge type of bioreactor. Okay, stir type and sparge type. Stir type means the stir type or the stirred type bioreactor. Stirring means that which has a stirrer within it, that is like the machines they have, ठीक है, stirring particular axle, ठीक है. ये stirring axle क्या करता है? That allows the proper mixing of the oxygen into the culture medium, leading to the more of the formation of the copies of the cell which has been obtained as a foreign gene product. उस प्रोडक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ फुल फाइनल स्टरिंग जो पॉसिबली करवा पाते हैं, दे आर द स्टर्ड टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर और द स्टर टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर्स. ठीक है, क्लियर? स्टर्ड टाइप्स एंड द sparged types. ठीक है, sparged and stirred, इसको पूरा stirred and sparged. Okay, so stir type of bioreactors, that which have the stirring axle, and because of this, that helps mixing all the materials along with the oxygen which is being supplied continuously, and also as a result there will be foam which is be produced inside. उस फॉर्म को भी कंट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम है उसके अंदर. मींस दिस इज फुल फ्लेज्ड, यू कैन से कंट्रोल सिस्टम्स ऑल अवेलेबल फॉर गिविंग इन द इनोकुलम, फॉर taking out the products which are formed after the multiple copies, everything which is well set and maintained within the bioreactors, leading to the formation of the large scale productions, that is the obtaining of the foreign gene product. Now foreign gene product तो हमें मिल गया जब हमने इंसर्शन कर दिया, पर वो बहुत थोड़ा था जिसकी वजह से हमें बायोरिएक्टर्स का यूज करना पड़ा ताकि हम उसको ज्यादा काउंट में बना सकें. ठीक है, लास्टली वी हैव downstream processing. After we have obtained a number of copies of these foreign gene product, now there will be downstream processing. Now what is this downstream processing? Downstream processing means marketing, but before marketing it requires many you can say long steps of its processes also. Still gene product obtain हो गया, ठीक है, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस हो गया, प्रोडक्ट मिल गया, कॉपीज बन गई, लेकिन अभी आप इसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते. उससे पहले इसके बहुत सारे स्टेप वाइज यू कैन से फिनोमिनाज आते हैं. फॉर एग्जांपल अभी तो पहले इसको चेक किया जाएगा. सबसे पहले तो इसको चेक किया जाता है whether this has been produced, whatever the product has been produced, is it the one which was required actually. ठीक है, the one which has been
originally showing us those changes which were desirable. ठीक है, पहली चीज ये चेक करी जाएगी, इसको सेपरेट आउट किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा. ठीक है, so the number of things that which are required in downstream processing are separation, purification, ठीक है, then its formulation. ठीक है, what are the various of the conditions required for the sustainability and preservations. ठीक है, अब प्रिजर्वेशन करनी है क्योंकि ये बचा के भी रखने पड़ेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम सर्व. ठीक है, उसके लिए अगर प्रिजर्व करना है तो इसको आपको प्रिजर्वेटिव्स के साथ भी ट्रीट करना पड़ेगा. तो दैट इज फॉर्मुलेशन के बाद इट इज नीडेड टू बी एक्टिंग विद द प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, बिफोर मार्केटिंग वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज एज वी डू इट विद द ड्रग्स, दैट इज द क्लिनिकल टेस्टिंग. है ना, तो क्लिनिकल टेस्ट भी इसके किए जाएंगे कि ये हार्मफुल तो नहीं है किसी तरीके से हमारी क्रॉप्स के लिए, किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उसके टेस्ट किए जाते हैं. एंड फाइनली इट इज देन आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज थिंग्स इट इज देन पैक्ड एंड मार्केटेड. फाइनली इसको मार्केटिंग तब करवाई जाएगी, तब इसकी मार्केटिंग करवाई जाएगी पैकिंग के बाद, जब ये सब कुछ अपना प्रॉपर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके एंड में हमारे पास अवेलेबल होगा. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग itself requires number of processing which are done on this particular foreign gene products that we have obtained in the large numbers using the bioreactors. ठीक है, so this is how we have obtained a particular organism which is now showing the desirable changes that which were required as according to the need of humans. ठीक है, तो हमारी नीड के अकॉर्डिंगली जो जो हमें डिजायरेबल चेंजेस चाहिए थे उसके हिसाब से हमारे पास सारे के सारी जो अवेलेबल सेल्स हैं वो अवेलेबल हो गए. एंड नाउ वी कैन यूज देम एज इन द फर्दर ग्रोथ ऑफ द न्यू क्रॉप्स और व्हाट्सएवर द थिंग वी हैव प्रोड्यूस्ड आउट. ठीक है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमने जो भी बनाया है उसके हिसाब से हम इसको नवे ग्रोथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, so this is we have ended up with this chapter also. We are done with the 5 of the chapters of your this term. We are left with only one, that is applications. Another part of this chapter, that is biotechnology and its applications. It was principles and processes. Now we have to start with the applications. अब यही सारा फिनोमिना हमने लगाया कौन कौन से फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स के साथ, मतलब फॉरेन जीन्स के साथ अपने नए प्रोडक्ट्स बनाए, वो हमने नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना है. ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस to anyone from this chapter?